Delhi Chief Minister, who's also Aam Aadmi Party's national convener, currently in fire because of clearly the hazy smoke that is surrounding not just the national capital but also Punjab because of the stubble burning of which Aam Aadmi Party is in government. But he says we will make Sapno ki Rajdhani referring to the one that is of a promised assured future for Delhi residents. But for us here, living in Delhi and in NCR region, it's that time of the year again, but it's getting worse. It's becoming very difficult to breathe now with the air quality of the national capital that continues to deteriorate. The AQI in several areas in Delhi, for example, have really turned into triple digits. Anand Vihar in Delhi is the worst affected. You'll be shocked to know that the AQI has reached over 920. One of the highest AQI so far, which means one of the worst air qualities. The situation is no different in other parts of Delhi, but it's not just Delhi, remember. It's also Noida, which is Uttar Pradesh, Ghaziabad. There is also Gurugram, Faridabad, which are parts of Haryana. They are also touching hazardous category of pollution, but one of the primary reasons remains the farm fire. The stubble burning continues in Punjab, Haryana, in parts of Uttar Pradesh. It is maximum in Punjab, where the Aam Aadmi Party is in government. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will be chairing a crucial meeting on this air pollution issue later today. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम पर। दिल्ली में ओवरऑल एक्यूआई की अगर बात करें तो बेहद खराब स्थिति में एक्यूआई लेवल जो है वो इस वक्त राजधानी दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से जो है वो लगातार बना हुआ है। अक्षरधाम की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अक्षरधाम इस वक्त स्मोक की चादर से जो है वो चारों ओर से घिरा हुआ है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर आज बात की जाए तो एक्यूआई कई हिस्सों के अंदर 450 के भी पार है। ये दिल्ली का एक्यूआई लेवल है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई जो है वो 771 है। तो वही दिल्ली से सटे नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में भी एक्यूआई का लेवल जो है वो बेहद खराब स्थिति में, यानी 616 पर एक्यूआई लेवल PM 2.5 का लेवल है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम की अगर बात करें तो 516 PM 2.5 का लेवल जो है वो नजर आ रहा है। यानी बेहद खराब स्थिति में दिल्ली एनसीआर की हवा जो है वो इस वक्त बनी हुई है। दिल्ली वालों को फिलहाल अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि फिलहाल दिल्ली के अंदर मौसम जो है वो इसी तरीके से जो है वो बना रहेगा और पराली जलाने के जो मामले हैं उसके कारण ही दिल्ली एनसीआर में इस तरीके से प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसी आम धारणा है कि पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जैसे श्वास से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसको प्रभावित करता है। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि यह न सिर्फ श्वास से संबंधित बीमारियां बल्कि शरीर के और बहुत सारे सिस्टम पर जो है यह एक्ट करता है। हमारे पास जो अध्ययन है वो ये बताते हैं कि वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक जिसको कि हम लोग लकवा की बात कहते हैं, और साथ ही साथ जो आर्थराइटिस जो है उसका इसका सीधे तौर पर इसका जो संबंध देखने को मिला है। साथ ही साथ जो है ये कई तरह के कैंसर को भी ऐसे हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं जिसके साथ कि एयर पॉल्यूशन जो है वो जुड़ा रहता है। इस साल दिल्ली में 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इस बार 31% पोल्यूशन कम हुआ। केंद्र सरकार को भी ये स्वीकारना पड़ा। अपने इकोनॉमिक सर्वे जो पार्लियामेंट में टेबल किया था 2022-2023 का, कि दिल्ली में इस बार 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। पोल्यूशन बढ़ने का दिल्ली में एक ही कारण है। पिछले 9 साल से दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जिसने कभी भी प्रदूषण को गंभीरता से लिया नहीं। उनके लिए ये भी एक इवेंट है कि 2 महीने वो इवेंट करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। पूरे साल वो इस पर काम करते नहीं। अगर दिल्ली की सरकार ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज दिल्ली वासी इसी तरह से घुटी हुई सांस लेने में या आंखों में जलन लिए सड़कों पे नहीं घूमते। पराली मैनेजमेंट में पूरी तरह से फेल हो चुकी है और जो आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर बड़े बड़े दावे कर रही थी, स्मोक टावर बंद है, 8 महीनों से बंद है, 23 करोड़ रुपए खर्च हुए। जब स्मोक टावर के बारे में बताया गया तब उनकी नींद खुली। जो रियल टाइम मॉनिटरिंग होने वाला था जिससे कि सोर्स ऑफ पोल्यूशन पता चलेगा, वो सेंटर भी बंद है। अब बताते हैं कि उनके पास डेटा ही नहीं बताने के लिए कि कहां से प्रदूषण आ रहा है और कैसे प्रदूषित हो रहा है। परंतु दोष डालने के लिए कभी उत्तर प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी केंद्र, इन सब पर दोष डालना है।
अपनी जिम्मेदारी से भागना है। यही अरविंद केजरीवाल की सियासत है, प्रदूषित सियासत है। दिल्ली की आबो हवा आज फिर से जहरीली है। फिर से एक बार लगातार दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में है। फिर से एक बार दिल्ली का AQI कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700 पार हो चुका है और कहीं पर तो 999 तक जा रहा है। उसके आगे तो मीटर बढ़ता भी नहीं है। दिल्ली का AQI जो है वो 5 सालों में सबसे खराब स्थिति में आप पहुंचा है। ये इसलिए हुआ है, दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की। ये पॉल्यूशन का जो विषय होता है ना, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। आखिर कहीं भी पराली जलती है, हवा के अंदर इधर से उधर जब हवा के झोंके चलते तो आती है। तो पंजाब का असर हरियाणा पर नहीं आएगा ऐसा थोड़ी है। जब पंजाब का असर दिल्ली में जा सकता है तो हरियाणा तो रास्ते में आता है। इसलिए इसका सामूहिक रूप से मिल बैठ करके कोई ना कोई सोल्यूशन देखने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार के नाते हमने पर्याप्त उसके जो उपचार करने के नाते जो मैय्यत उसके लेने चाहिए हमने लिए हैं। देश के 23 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 हरियाणा में, यानी कि हम अपनी अगली पीढ़ी को किस तरह का भविष्य देके जा रहे हैं, किस तरह का स्वास्थ्य देके जा रहे हैं। और अगर हम उस पर कुछ कर नहीं रहे तो हम सब उसमें दोषी हैं। और इसीलिए मैं मांग करना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए, अलग अलग राज्यों की बैठक हो और हर राजनीति से ऊपर उठकर किस प्रकार कदम उठाए जाएं, इस पर खुले मन से चर्चा हो। समाधान के क्या कदम उठाए जाएं वो निर्धारित किए जाएं। Well, you know, I can tell you that whether it's in our newsroom, in our studios, in our families, each one of us are reporting different kind of respiratory issues, burning eyes, a sore throat. I have an aggravated cough as well, and that's reflective that irrespective, even those who can possibly afford an air purifier at their home are not able to escape what we are witnessing in Delhi, Noida, Faridabad, Gurugram. Here's what is happening, looking like, remember, on one side, you can see what used to be fog earlier for a beautiful winter of the national capital is now smog with hazardous level of air quality. Noida in Uttar Pradesh, Ghazipur, Ghaziabad area, again in Uttar Pradesh. Then there is Gurugram in Faridabad. But one of the reasons is farm fire, the stubble burning, that despite alternatives, despite subsidies, the farmers still seem to believe that the stubble burning is the easiest, most affordable to them. And the result is on your screens right now. This is India Gate, which usually is a hotspot every morning for joggers, people who want to come out, and it's actually a very popular destination for mornings in Delhi. And this is what it's looking like. It's not safe by any standard. In fact, medical experts and doctors have advised not to go out to exercise and walk, and yet some people have chosen to do so for reasons best known to them. You're looking at the AQI on your screens, 455 in Punjabi Bagh. If you compare it to a Western world city, for example, New York, it's merely in double digits between 20 to 30, 718 in Jail Mill industrial area. So remember that there are a lot of measures that you can also take. Possibly one, of course, is the air purifier for your house, which are inside closed walls. But you must carry an N95, N99 mask, according to the medical experts, if you are heading out. Try to ensure as much as possible to not venture unless it's necessary. But remember, many of us who have to head to work or other appointments as well, it is imperative to take all possible precautions. Let's get an update from on the ground. Anmol Bali, my colleague, has been tracking all the latest on that. Anmol, what is the haze right now? Is there any reduction in it, or is there going to be any changes? Just stay on with me, because I'm told that Gopal Rai, Environment Minister, is speaking. He's from the Delhi government. Let's listen into him. जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए, स्थिति सामान्य हो, इससे सब चीज़ें सामान्य हो। लेकिन अभी तो लोगों की कोशिश हमारी यही है कि कम से कम इस जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए और जो लोगों के सांसों पे इसका असर हो रहा है उसको कम किया जाए। तो मुझे लगता है कि अभी सबको उसमें सहयोग करने की जरूरत है। सवाल सर, दिल्ली में क्रिकेट मैच होना है और उसे लेकर हालांकि बीसीसीआई आईसीसी की तरफ से कहा गया कि आतिशबाजी यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई इन्फोर्समेंट, कोई दिशा निर्देश इसके लिए जारी किया जा रहा है? नहीं, उसके लिए तो केंद्र सरकार ही जारी करेगी।
All right, so that was a brief comment coming in from both the Chief Minister and the Environment Minister Gopal Rai. Remember, temporary measures are being announced, and I'll take that to Anmol Bali. Anmol, some measures have been announced. For example, the schools have been shut. Do tell us about that. But what is the situation around you? What do you feel like? Are you still feeling it's difficult to breathe this morning in Delhi? Yes, Pooja, if I talk about the current AQI in the national capital, that has gone to 432, which comes into very severe category. And yes, it's very hard for a common man to breathe in national capital. I was reading various reports in the newspaper that people coming to hospital with itching in the eyes as well as cough and sore throat has increased. So from here, one can understand the condition on the ground due to the pollution, and as well as the GRAP stage 4th has been also implemented. The school has been asked to go to the online mode for the 10th of the November. From here, one can understand the condition of the national capital. Not only in the national capital, but the adjoining Gurugram as well as Noida are also witnessing high level of AQI, where the AQI has breached the 500 mark in the various corners of the national capital, Pooja. All right, Anmol Bali is telling us about how not just Delhi, but Noida on one side in Uttar Pradesh, Gurugram in Haryana are also witnessing the toxic smog around. And remember, it has been there for the past few years, about 10 to 15 years. Earlier, there wasn't a situation like this. This has happened in the past 1 decade, but it only seems to getting worse by the day. And that, remember, has bothered a lot of people, specifically those with children and elderly in the family. So there are some emergency temporary measures that have been taken, which is GRAP4, that have been imposed in Delhi. What does that mean? Let me take you 5 of those decisions that have been taken. Entry of trucks have been prohibited, specifically during the daytime and to come through the city. But if there is a vehicle that is carrying essentials, that will be allowed. Specifically, if it's a medical essential, food, etc., that will usually be permitted. According to and for the educational institutions, schools to take a decision. While the government schools have been, for now, primary schools have been told to stay shut till 10th of November. But other schools are likely to take a decision today if they want to discontinue physical classes and go back to the online mode. Offices will also have to take a decision if they can permit their employees to work from home if it's not necessary to travel to the office stations. Additional emergency measures are also likely in the next few days, possibly, depending on how the situation goes ahead. But the fact remains, it's always emergency, temporary measures. And then for the next year, our netas bicker again and made more promises without any conclusion.